वापस थक कर मैं आ रहा था खानपुर डैम से। खानपुर डैम जहाँ पर मैंने खूब सारे मज़े किए, वहाँ पर स्विमिंग की, मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की और फ़न चीज़ें की। काफ़ी इन्जॉयमेंट हुआ, पर मैं काफ़ी थक गया था। मुझे चाहिए था समथिंग रिफ़्रेशिंग, समथिंग दैट विल रिजुविनेट माई इनर सोल। और फॉर दैट व्हाट बेटर वे देन गोइंग फॉर सम अमेजिंग शुगर केन जूस। अब इस रास्ते के अंदर आई वॉज राइट नाउ हेडिंग टूवर्ड्स समवेयर एल्स। मैं घर जा रहा था जब मैंने रास्ते के अंदर एक शुगर केन जूस की शॉप देखी, एक ठेला देखा। आई फाउंड अ प्लेस फॉर दैट एंड एज यू गाइस कैन सी, अमेजिंग वर्क ऑफ द वर्कमैन। पर्सनली आई एम रियली अ बिग फ़ैन ऑफ दिस, क्योंकि ये एक बहुत ही एक नेचुरल बट एक बहुत ही मज़ेदार तरह का जूस होता है। इसके अंदर नो एडेड शुगर्स, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती हैं। इट्स totally natural. यहाँ पर they give you some extra salt in it that makes it a little salty, and they just make it real sweet and salty and a mix of both flavors. That's just a creamy delight. It's super amazing. If you guys ever come to Pakistan, if you guys ever come to anywhere, क्योंकि मुझे तो पता है lots of people are from Pakistan that are watching this, but you guys should try केन जूस। हालांकि मुझे पता है बहुत से लोगों ने ट्राई किया होगा, पर अगर आपने नहीं किया, यू शुड ट्राई इट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिलीशियस जूस। एंड एज यू गाइस कैन सी राइट नाउ, वो एक एक गन्ना, एक एक शुगर केन डाल रहे हैं मशीन के अंदर, और वो मशीन उसे क्रश कर रही है। एंड द वेस्ट जो उससे वेस्ट बनता है, दे कैन यूज़ दैट फॉर मल्टीपल डिफरेंट पर्पसेस। और वहाँ पर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मशीन से पानी जो उसका है या जूस जो हमारे शुगर केन का है वो यहाँ पर आ रहा है। ही इज़ हैविंग सम एक्स्ट्रा लेमन्स, वो लेमन्स भी डाल रहा है फॉर एक्स्ट्रा बिट ऑफ sour citric acid type of flavor that's really amazing, and I really love sour stuff. यहाँ पर बर्फ़ भी है अंदर ताकि it's a bit cold, and he's just swirling it around a little bit, and he's just making sure that it's all good and all nice. And as you guys can see, it's just coming to an end. Here right now he's gonna get himself some cups ready. First of all, he's gonna shut down the machine because that's way more important. So he's gonna put some cups up first that he can put the juice in. इस तरह के आप सब लोग देख रहे हैं। Yeah, it was really windy at the time, तो बार बार गिर रहे थे और वो बार बार भाई जो है वापस खड़े करवा रहे थे, and they were just falling and standing up again and again. He turned off the machine. He puts them all and they all fall back down. Really irritating, I know. Sometimes can be satisfying. Yeah, again and again. Really, again and again. And brother was he really angry at that. So ये देखें आप, look at the juice of it. हाँ, मुझे पता है, now everybody would be like, wow भाई ने तो पूरा कप ही नहीं भरा. But just see what he does by the end of it, because he's a master at his work. He knows what he's doing, bro. You have no need to tell me that oh he didn't fill it up full. I know, मैंने भी एडिटिंग के दौरान देखा, and it just really seems like क्यों नहीं भरा full, but he does fill it up all. So as you guys can see, the juice is really good, orangey type of juice. That has this yellowy color to it, really amazing, just like sugar cane, natural, all amazing, and you guys should really check it out. As you guys can see, it's just the last bit of the juice added, और यहाँ पर हमारा juice finish हो जाता है. He just adds a little bit of extra salt upon it, on the top of it. He adds that, and he gives us some straws with it. Now you guys are gonna see. He's gonna first of all put a little bit of our delicious salt on it. Yup, as you guys can see, he's gonna put that. Then he's gonna put some straws in it. We can just mix it right up and drink it and enjoy the whole taste, the whole refreshness, and the sweet feeling of energy inside our veins, because sugarcane is a great source of energy, of taste and rejuvenity. So it's gonna be really amazing. I tasted it, it was great, it was delicious, it was miraculous, and I was a big fan of it. If you guys ever find it, drink some. So as you guys know, दिन भर की थकावट, dehydration कामों के बाद, it's quite nice to have a bit of sugary fun and quite a bit of sugar cane. Yeah, it's sugar in the purest forms. Now, why is it good?
Well, if you guys haven't drank sugarcane juice, you won't know how it is because it's really nutritious. It's really good. It tastes good and it's not bad for the health. So there's no added sugars or no bad sugars that will have a negative effect on you. So it's a good thing. If you're dehydrated, wanna get some more, go get some sugarcane juice.